Good evening and welcome. Welcome to our regular Wednesday meet session. So I welcome all the regular participants and Anjuji, our guest here today. This session is the agenda that we are taken on since the last week is Bhakti Yoga. So in the last session, we discussed on Bhakti Yoga, the path of love. And today it is in continuation. And the topic for today is Bhakti ki Shakti. Yes. So we are going to do a quick recap of एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन में हमने क्या सीखा, क्या डिस्कशंस हुई, सो दैट सब लोग थोड़ा सा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे. उसके बाद वी विल कैरी ऑन विद द विजडम फॉर टुडेज सेशन. सो हु वांट्स टू शेयर व्हाट वाज द टेक अवे फॉर यू इन द लास्ट सेशन? आई विल स्टार्ट द yes Imiji, go ahead. We were discussing Bhakti Yoga, the path of love. Yes. Yeah, so a new thing which opened up is that we need to arise that divinity from us, within us, whenever we do prayers. And we should give some form, like Vaishno Devi hai, so it is a mother which we are, worshipping. कान्हा है तो इट्स अ चाइल्ड. सो हर रूप जो है हमें वो जो एक डिवाइन है उनको एक रूप में रूप से एक प्रेयर करनी है एंड उस हिसाब से हमें अपने अंदर में डिविनिटी को अराइज करना है. Fantastic. Very good. So let's acknowledge Simiji. She actually summarized the whole session. So I'll explain a bit more so that everybody can connect with it. So first of all, we have to understand when we talk of Bhakti Yoga, it is one of the four paths which has been defined as the path of yoga, right? So we have, just to name it, we have Karma Yoga, where we do the yoga of action. Yes. So we get into the action mode and then we attain oneness with the divine. So yoga is basically oneness with the divine. So when you when you are moving on the path of Karma Yoga, you are in an action mode and you are looking for oneness with the divine. Second is Bhakti Yoga, where you're on the path of love. And moving on that path, you aim for the oneness with the divine, right? Then you have Raj Yoga, which is the Patanjali Yoga Sutra, Ashtanga Yoga, which is meditation, pranayam, and the 8 limbs of yoga that you follow. So that is Raj Yoga. So Raj Yoga meditation is very, very common. Sister Shivani does that in Brahma Kumaris in a very, very powerful way. Yeah, so that is Raj Yoga meditation. So Raj Yoga is the third path. And Gyan Yoga, that is the path of wisdom, path of knowledge, Gyan. Correct? So these are the four paths. We are talking of Bhakti Yoga. And what Bhakti Yoga does is, in the path of love, it expands your heart chakra. Your heart is full of love, is filled with love. And all the negative emotions melt away, are completely dissolved in that unconditional love that you generate within you by invoking the divine. So that is the path of love. And most human beings follow that by default. क्योंकि जब जिस भी फैमिली में बैकग्राउंड में पैदा होते हैं, जो संस्कार हमको वहाँ पे मिलते हैं, जो कंडीशनिंग हमारी होती है, तो उसी हिसाब से अगर जैसे हिंदू फैमिली है, वी गो टू द टेम्पल्स ऑन ट्यूसडेज, some other people, like they go to the church on Sundays or they go to mosque on Fridays. So selected days में हम automatically family के हिसाब से उनके mindset से चलते हैं, and that is how in childhood we pick up the basics of bhakti. So as I was born in the Hindu family, I picked up the normal routine of दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, हाथ जोड़ना है, एग्जाम के दिनों में 2 बार जोड़ना है, kind of a thing. So if there is something that you want, then you do that with a lot of earnest and urgency, and then you डर के भगवान के पास जाते थे. So God was somebody who was a protector and who was a punisher kind of a thing. So punishment भी देते थे, reward भी देते थे. That is the kind of God I used to worship as a child. So as a child I believed in God. So जैसे हम believers होते हैं. So when we believe in God or we don't believe in God, तो ऐसे ही दो लोग होते हैं ना, या तो theist होते हैं या atheist होते हैं. पर जब हम योग मार्ग पे आने लगते हैं, then you give up both the ways. You are neither a believer nor a non-believer. Then you start to know God. तब आप भगवान को मानते नहीं हो, क्योंकि मानना या ना मानना बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. Why? Because then you are trying to know God. तो जानना चाह रहे हो भगवान को, भगवान है कौन? That is when you understand the spiritual laws. That is when you understand the whole concept of
union with the divine. Correct? So that is how we move on the path of Bhakti. So आप rituals में कुछ भी कर सकते हैं. You can go to the place of worship on a designated days. आप अपने घर में एक छोटा सा place of worship बना के अपनी प्रार्थना कर सकते हैं. You can pray, you can chant, you can do any mantra, you can listen to all kind of mantras, and like Simiji said, you can worship God in different forms, name and form. भक्ति योग में क्या जरूरी है? साकार सगुण भगवान की हम पूजा करते हैं, तो इसलिए नेम एंड फॉर्म होना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन. नेम एंड फॉर्म जब होता है तो वी कैन वर्शिप गॉड एज अवर डिवाइन फादर, डिवाइन मदर. तो वी वर्शिप द गॉड एज ए प्रोटेक्टर, as a guru, as a guider who gives us guidance, as a teacher. We can worship God as a child. So कन्हैया को प्यार करते हैं. You can worship God as Kanhaiya, so you can worship the divine as a child. You can also worship divine as your Sakha. We saw this in the last session. So as a Sakha, then as a lover, as your life partner, you can worship God as your lover. So that is also a possibility in which you can fill your heart with full of love, and then you radiate that love to all the people in your life. So that is how the Bhakti Yoga can transform your life. Correct? This is what we discussed in the last session, just to have a quick recap. Now, having said this, I also said that जब आप भक्ति योग में अपने अंदर डिवाइन को इन्वोक करते हो तो वो डिवाइन क्वालिटीज जो हैं वो आप अपने फैमिली में एक्सप्रेस करेंगे. सो if you are worshipping God as your divine father or divine mother, your relationship with your parents should alter or transform, because you will be able to shower that love with them. Similarly with your siblings or your son or your children, correct, or your friends, and of course with your partner or your guru. तो इन सबके साथ आप भक्ति योग में अगर आपके हार्ट चक्र में अनकंडीशनल लव आ गया है तो वो लव आप उनको बांटेंगे, वो ऑटोमेटिकली होगा. तो क्या ये हो रहा है या नहीं? दिस इज द चेक पॉइंट व्हेन यू आर ऑन द पाथ ऑफ भक्ति. करेक्ट? करेक्ट सिमिजी? सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन. एंड why is this so important? In fact, many people say I can love God, but I have a serious complaints against my parents. पेरेंट्स के साथ बहुत कंप्लेंट है, भाइयों के साथ कोर्ट केस लड़ रहे हो, प्रॉपर्टी केस चल रहा है, एंड देन यू से यू आर इन लव विद गॉड. So are we living in a concept of God, or are we actually in love with God? Tell me one thing, or just ask yourself. Can you love God if you don't love your parents? You have no love for your family. You have no love for your children. बच्चे आपकी सुनते नहीं है, आपकी उनसे बनती नहीं है, आप उनसे बात नहीं करते, उनसे प्यार नहीं होता. मतलब there is no amount of, मतलब there is no presence of love. आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है लव का फैमिली के रिलेशनशिप में. If you're not in love with your parents, your children, your friends, your siblings, do you really think you can love God? Or do you really think that you know God? What would you say? आप ऐसे इंसान को क्या बोलोगे जो अपने परिवार को प्यार नहीं कर सकता? क्या वो भगवान से प्यार करेगा? क्या उसके अंदर प्यार है किसी को देने के लिए? बट सर सिचुएशंस चेंज भी हो सकती है, पहले प्यार हो बाद में ना हो. वो अलग चीज, वो अलग चीज, वो कार्मिक है. फिर उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, है ना. उसके लिए आप रिलेशनशिप को हील करोगे, जो भी कर्मास में है उसको जो आदान प्रदान होना है उस एनर्जी को डिसॉल्व करोगे. अल्टीमेटली इट इज ऑल लव ओनली, नो. In every relationship you should be having an energy exchange of love, peace and joy. That is when a relationship is healed. And relationship की healing heart से ही होती है. इसीलिए भक्ति योग is so very important and so significant in our relationships, in our day-to-day life. No wonder it is the most common form of worship. भगवान से बहुत प्यार करते हैं लेकिन लोगों को काट रहे हैं एक दूसरे को. कहाँ है डिवाइनिटी? If you are following bhakti, if you are on the path of love, you will fill yourself with so much of love. You can only give love to others. So you will be in love with your parents. You will be able to forgive them fast. अगर कुछ हुआ भी है तो not only parents, you will be able to forgive your siblings, your friends,
your relatives, your children, your neighbors. ये सब आपकी लाइफ में है क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है उनके साथ, तभी तो आए हैं। 800 करोड़ लोगों में आपने उन्हीं दोनों को क्यों चुना जिनके यहाँ आपको पैदा होना था? Obviously, there is a very strong karmic relationship. That's why you are born to your parents. Now, don't say I hate my parents. बाकी सब बहुत बढ़िया है. I'm in love with God. Rubbish. You have no idea how much hatred you have in your heart. पेरेंट्स से प्यार नहीं कर सकते तुम भगवान से क्या प्यार करोगे और किसी और से क्या प्यार करोगे? Making sense? How many of you are making sense? Connecting with me? Yeah. Correct. So let us not live in a concept of what is God. Let us make the God real in our life. This is called God realization. बहुत सुना है ना God realization? God realization का मतलब क्या है? When God is real in your life, that is God realization. So you have to manifest the divinity in your life. Just don't know that God is there somewhere. No, God is everywhere, but God is present in your heart. मैं नहीं बोल रहा, ये भगवत गीता में बोला है लॉर्ड कृष्ण ने, I dwell in the heart of all living beings. So you have to invoke the divinity within your heart. Fill your heart with love. Then you will only give radiate love to everybody. Then you know that you have invoked the divine in you. Then you are in love with God. How many of you can connect with what I'm saying? Making sense? Yeah. Yes, Vijayji, you raise your hand. Please go ahead. Shashi Dharji, does it not bring in separation between God and self when we talk about Bhakti Yoga? You are invoking the God in your heart. Is your heart separate from you? No, but when you say that you think about Lord Krishna as a baby, or you think about Shiva or somebody else, I mean, then you're separating yourself from that person that you're thinking about, and praying. See, in the realistic world, you can't say you and your father are one. But when you are treating your God as your father, when you're treating God as your father, you can say God and I are one because the God is in me. है ना? So Bhakti Yoga is basically you have a name and form to worship the God. But वो God कहाँ invoke होगा? आपके अंदर ही होगा. But is it necessary to do that? That's what I'm saying. That is Bhakti Yoga, no? If you have acceptance and love light in your heart, and you don't have hatred towards anybody, you don't do anything wrong to anybody. So where is the role of Bhakti Yoga in that? Bhakti Yoga, you can equalize Bhakti Yoga to the presence of love in your heart. Okay. If there is love in your heart, you are already practicing Bhakti Yoga, whether you want to believe it or not. आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, तुम ही राम. नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो जो मैंने देखा था उसके अंदर you were talking about 5 different elements that one needs to work on. There are 5 ways how you can worship the divine in Bhakti Yoga. वो बताया. Right. So I was trying to understand what is the role of these 5 things. If you are basically, the idea is to flower your heart, right? See, the idea is that you should have all kinds of flavors of love in your heart. तो पेरेंट्स के लिए आपका लव डिफरेंट होता है ना, बच्चे के लिए अलग होता है, दोस्तों के लिए अलग होता है, ऑब्वियसली अपने वाइफ हस्बैंड के लिए अलग होता है तो सभी लव, पर लव के अलग अलग, यू कैन से देयर आर डिफरेंट व्हाट डू यू से शेड्स ऑफ लव, करेक्ट? Though you can say God is one, God is love, love is God, I love everybody, I love God, so I am in love with all the 800 crore population on this planet Earth. Looks very good, rosy, but then you should understand the way you love your wife and the way you are, I won't say anybody else's wife is different, right? It cannot be the same. So why are we talking we are living in concepts? I love my son more than anybody else's son. It's obvious. I love my wife more than anybody else's wife. Obvious. So there has to be a distinction in the realistic world, you know. That's where I'm not sure about, you know. What is there? You look at life, no? Don't live in concept. Ask life. How do you love your parents and how do you love the neighbor's parents? You respect them, that's all. And you know they are God in human form. I am also God in human form. It's a matter of how you define love. I mean, respect is also a form of love.
I understand that. That's what I said. Love will have different shades. So respect that. Find out that and express that. But आपको अगर hatred है, anger है, तो आप love का definition नहीं जानते फिर आप. So love is absent, because if love is absent, then there will be fear. If you are fully established in love, you will be absolutely fearless in life. Yes or no? Absolutely. क्योंकि अगर लाइट है तो डार्कनेस नहीं होगी, डार्कनेस है मतलब लाइट नहीं है. तो अगर फेयर है, दैट मीन्स लव इज मिसिंग. और अगर लव है तो फेयर विल नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लव, फेयर इज एब्सेंस ऑफ लव. फेयर हैज नो एग्जिस्टेंस. फेयर का मतलब यही है, इट इज रियल, बट उसका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. यूनिवर्सल ट्रूथ है लव का, बिकॉज लव इज गॉड, गॉड इज लव. लव इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. एब्सेंस ऑफ लव इज डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लव इज फेयर. लुक एट इट दैट वे. तो हार्ट में या तो डिवाइन है या ईगो है. See, the reason I am asking all these questions is probably my ego is very high, or whatever is the situation. I have never been able to do idol worship. Don't do idol worship. Fall in love with people. That's what I'm saying. Yeah, which is fine, which is good for me. I enjoy everybody, so that's another thing. I have no hatred towards anybody. That's I love fine. everybody. Not having hatred doesn't mean that you love. Huh? I mean, You can be okay, indifferent. So understand, bhakti means you are overflowing with love. If your right. cup is full of love, you will only give love to everybody. That is bhakti yoga. Okay, okay. Correct? So let us identify what kind of love do you share with your parents and your children and your siblings and your friends and your partner. They are different shades of love that you experience in your life. Very, very important, because then you are ready to share that love with everybody else. पर अपने फैमिली को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो, एंड देन यू से आई एम इन लव विद ऑल द पॉपुलेशन इन यूक्रेन एंड रशिया, डजंट मेक एनी सेंस. यू डोंट इवन नो देम, है ना. तो पहले जानना पड़ेगा. यू कैन लव गॉड ओनली व्हेन यू नो गॉड. Just like you can love somebody in Russia only when you know that person. Correct? You can't say I love all the 800 crore population on this planet Earth. It's all a concept. It is good. You should have that kind of a concept, but you should know it is a concept. It is not a reality. No, I understand when you say that basically you should be brimming with love. So whomever you come across. Absolutely. You fill yourself up with love and then you radiate that love to everybody. That is bhakti yoga. So if you're already doing that, then there is no need for anyone. But the easiest way to do that is worship divine in any form, fill yourself up with love, and then radiate that love to everybody. So that is the basic message of bhakti yoga. Clear? Hai? Oh, yeah. Very good. Let's acknowledge Vijayji. I know he's a staunch follower of Gyan Yoga and Vedanta, so it's very difficult for him to switch to the bhakti mode. But trust me, once you do that, it will be very easy. Correct? Okay, because you are in love with people only because they have a name and form. If there is no name and form, you will not fall in love with any person. You fall in love with a cat or a kitten or a puppy just because there is a name and form. वो हैं आपके सामने. No, I love the trees and the lakes and the They are also mountains. name and form. Everything in this universe is name and form. That is why Bhakti Yoga is so prominent, because that is the most real one for everybody. Okay. But it is built on faith. Faith and trust में क्या फर्क है मालूम है ना? Trust के लिए you have to, और belief के लिए you have a reason. Faith के लिए you don't need any reason. इसीलिए भक्तों को अंधभक्त बोलते हैं ना. भक्ति अंधी ही होती है. अगर आप भक्त हो तो आप अंधे ही हो. बट भक्ति योग में स्थिरता लाने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान का तड़का लगाना चाहिए, so that your understanding is right, so that you are not blindly following anything. So I'll come to that aspect now. So how to be a enlightened bhakta rather than a blind bhakta. Correct? So let us look at that. There is a very famous yes. Before that, let me ask if anybody else. Yes, Sanju ji, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Now, what I could understand up till now is that Bhakti Yoga is basically having lots of love in your heart and then giving love to others. एक तो ये मैं समझी. दूसरा ये समझी that Bhakti Yoga emphasizing on name and form. ठीक है? प्रकार से गुण. Perfect. Third is that Bhakti Yoga teaches us to have faith in God.
Okay. Now, these Okay. three aspects, if a person is having lots of love in heart, giving love to people around, having faith in God, and also worshipping God every day at home, how important it is to go to a temple. It is your practice. You can go to a temple outside, you can have a temple inside. You don't need to have a temple, it is fine. You can simply No, chant. we have a small temple at home, and we are doing everything, and we are having prayers, offering prayers every day. So, eh, in that case, how important it is go to a proper temple outside the house? No, no, not important. It's entirely your Not choice. important. It's not important. You can Because go it is entirely your choice. Only thing is, when you go to a designated temple, like जैसे आप किसी ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं हम? 4 धाम की यात्रा के लिए, वहां का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है. That vibration is such that if you go to that place, your vibration will get raised. So people actually go there to get that divine vibration in their system. Hmm. Correct? But if you can do that sitting at home, आप घर में भी अगरबत्ती जला के दिया जला के कर सकते हो. आप एक घर के एक कंफर्ट में बैठ के आप राम राम जप लो और पूरे ध्यान के साथ अगर आप कर रहे हो, एंड दैट इज इन्वोकिंग द डिवाइन इन यू, दैट इज ग्रेट. तो कोई छोटा मंत्र कर सकते हो, कोई दिया जला सकते हो. रिचुअल्स कैन बी डन एनीथिंग दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू. यू डोंट हैव टू फॉलो एनीबडी. रिचुअल्स एंटायरली योर चॉइस. बट रिचुअल्स में हार्ट एंड सोल डालोगे तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा. तो वो रूटीन में मैकेनिकल नहीं होना चाहिए. इट शुड इन्वोक सम डिविनिटी इन योर हार्ट, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल. करेक्ट? तो रिचुअल प्लस soul calling, that will be spiritual. So look at it that way. You have to just add a S behind the ritual, SP rather. No? Yes. So it will become spiritual. Speed डालना उसके बाद, है ना? So look at it that way. Right. Anybody else? Let's acknowledge Anju ji and Vijay ji for their sharings. Anybody else who wants to share? Simi ji, Parveen ji, welcome. Parina ji, Mani ji, anybody who wants to share? Otherwise, we will go to the next part, which is important. Yeah. It's You can clear. go ahead. You can go ahead. Yeah. Okay, good. Yes. Right. So now let us look into. Now we have understood what is the significance, what is the importance of Bhakti Yoga. Now let us look into a shloka which is mentioned in Bhagavad Gita, which Lord Krishna is saying, right? So Lord Krishna says, Yoga Kshema Vahamyam. I'll explain what it means. It says, surrender yourself to me and I will take care of all your burden. In fact, the literal translation is, I will carry all your burden. So transfer everything to me. सब कुछ मुझे दे दो. Surrender to me and I will take care of it. Basic essence is that. Now you have to understand this, the real context of this shloka. So before I explain that, let me ask, what does it mean for you? भक्ति योग में है और आपने ये सुना, तो क्या मतलब निकाला आपने? I think if you have faith and belief, then you are out of all the trouble because everything is being done by the Lord. So you accept. Okay, that is one understanding. So everything is being done by God or by the divine. So dash. उसको क्या करना है फिर? उसको आराम से बैठना है. अब तो भगवान जी करेंगे सब कुछ. उन्होंने भगवत गीता में बोल दिया, मैंने पढ़ भी लिया, मैंने रट्टा भी मार लिया उसको. योगक्षेम वहाम्यम, I don't have to do anything. God will take care. I have to surrender. I have surrendered. No questions. I have definitely surrendered everything to the divine. So I can sit back and relax. वो मेरे को जॉब दिला देंगे, वो मेरा खाना पीना का इंतजाम कर देंगे, वो मेरा प्रमोशन करवा देंगे, वो सारे प्रॉपर्टी के हैसल सॉल्व कर देंगे, वो मेरे सारे फंड्स फ्लो ठीक कर देंगे. अगर ये मतलब निकाला किसी ने तो उसको क्या बोलेंगे? कर्म तो करना ही है सर, बिना कर्म किए कैसे कुछ होगा? Right. So you have to understand the exact meaning of this is when Yoga Kshema Vahamya means when you surrender to the divine. First of all, you need to understand what are you surrendering to the divine. I am surrendering my ego, my fears, all my negativities to the divine. So when I surrender everything to the divine, what will happen in my heart? My heart will be full of divinity, full of love.
that divine, when I invoke that divine in my heart, that divine will take care of everything. Then that divine will guide me, will give me the intuition, will give me the right understanding. With that right understanding, I will have the right intention. With that right intention, I will have the right effort. With that right effort, I will have the right energy to do the right things and get the right results. Right? So Yoga Kshema Vahamyam means you have to understand when Lord Krishna is saying that whatever he is saying, he says spiritual truth. You surrender to the divine will take care. That's what he is saying. He is representing the divine, not a human. तो वो कोई आके कुछ नहीं करने वाला. स्टोरीज में तो ऐसे ही दिखाएंगे कि लॉर्ड कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. But you have to understand that is as a story that they have been told. The whole idea is that I have to invoke the divine in me, and when my heart is full of love, the divinity is invoked, then I will get the right kind of बुद्धि योग बोलते हैं. Then I will get the बुद्धि योग में आ जाएगी. बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन शरीर को चलाएगा, और शरीर के जो एफर्ट्स होंगे उससे मेरे रिजल्ट्स सही आ जाएंगे. मेकिंग सेंस? लाइक अंजू जी सेड, कर्म तो करना ही है, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता के दूसरे श्लोक में बोला है ये, कर्म के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते. पार्थ कर्म तो तुम करोगे ही करोगे. बट surrender your ego to me, surrender everything to me, and I will and do your धर्म. सारे अपने fears मेरे को दे दो, and जो आपका धर्म है उसका पालन करो. और इसलिए गांडी उठाओ और युद्ध करो. ये तुम्हारा धर्म है. अभी यू आर ए सोल्जर, यू आर एन आर्चर. तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना. करेक्ट? So a soldier at the border will have to follow the orders and would do whatever is required for the love of the land, to protect the country. Correct? Similarly, एक टीचर का धर्म है शिक्षा देना. एक हीलर का धर्म है हीलिंग करना. एक टीचर का काम है बच्चों को सिखाना, जो भी है. करेक्ट? डॉक्टर का काम है. तो जो कर्तव्य है उसका पालन करो. Surrender the results to me. Focus on your karma. Making sense? So Bhakti Yoga doesn't mean you are free from karma. Bhakti Yoga means now you have to do the karma with lot of understanding. And that understanding will come when you surrender all your fears, all your ego, अपना अहंकार छोड़ दोगे और भक्ति में आ जाओ. Yes? Making sense? So let's have some people share what is opening up. तो भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ जाना. भगवान कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर हैं. उनको इन्वोक करना है, फिर जैसा वो बोलेंगे वैसा करो. That is the meaning. Yes, so let's have some people share. What is opening up? Yes, Gunjan. You're on mute. Sir, I was not sharing a good relationship with my parents. So, आपसे भी काफी बार ही मेरे को लेक्चर मिल चुका है और अभी मुझे ऐसे लग रहा था आप मुझे ही बार बार सुना रहे हो. But yes, I actually surrendered myself today only in the evening. मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है. Please help me in doing so कि मेरा ये ईगो नीचे आ जाए और मैं ही सरेंडर आपको अपने आप को करती हूँ. And please help me in this because I actually need to love. I want your love. आपका प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. तो आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए. तो क्या जवाब मिला? क्या अंडरस्टैंडिंग मिली? पहले जवाब तो ये आपके वर्ड सुन रहे थे बार बार तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जल रही थी. Then I had a good rest for 10-15 minutes and शायद कुछ इन्वोक हुआ होगा अंदर. अभी पता नहीं, कल तक पता चलेगा. Okay. Good. So अभी work in progress चल रहा है. Let's acknowledge Gunjan ji. That's very good. Yes, you are right. We had a discussion, so it was fresh in my mind. So मैंने कुछ dialogues आपके लिए ही बोले थे. That is fine. But it is meant for everybody, right? If you can't love the people who are closest to you, then you forget about loving God. And if you can forget about loving God, then you also forget that God is going to love you. So that was a blunt statement I made to her, and it woke her up. So you have to understand, God कहीं बाहर नहीं है. गॉड को रिक्वेस्ट नहीं करना है, गॉड को इन्वोक करना है. गॉड इज इन यू. वो सो रहे हैं, उनको जगाओ. जब तक ईगो जाग रहा है, डिवाइन सोएगा.
जब डिवाइन जाग जाएगा तो ईगो सो जाएगा. Only one of them can be active, right? Either you can operate through your ego or you can operate through the divine in you. So अपनी spiritual साधना पे focus करो. Invoke the divine in you. Then the divine will guide you. Take actions. That's all it is. अपने आप आएगा. When the divine is invoked, you will get the right understanding, the right decisions, the right intention, the right effort, and the right results. It will follow. Very good, Gunjan. So that is the path you need to be. Let's acknowledge Gunjan. Yes. Anybody else who wants to share? Parveen ji, क्या बोल रहे होंगे? What is opening up? No, like Gunjan shared, तो मेरी भी मेरे mother के साथ was relationship was not too good. So अभी भी जब मैं prayers करती हूँ, देवी का भजन तो हम गाते हैं, पर मुझे वो feeling नहीं आती for the देवी, because देवी is mother. So मुझे कृष्णा के लिए ज्यादा आती है, शिवा के लिए ज्यादा आती है, पर देवी का भजन जैसे वो from the mouth, but it's not from the heart, because I don't know how I feel now that ठीक है मेरी मदर के साथ नहीं है तो देवी को मैं भजन गाती हूँ, but not from the heart. But I don't know, I have developed a very good relationship with my daughters. We are like friends. So I don't know how it worked, but that's how it worked. कि मदर के साथ नहीं था, but with my daughters I have. But वही देवी का I can't associate. Devi is that a protective, caring, this thing. तो देवी का मैं नहीं associate करती. So Parveen ji, are you ready for some coaching? Yeah. Okay, good. I'm ready. तो आपके हार्ट में अगर 4 आर्टरीज हैं, 3 काम कर रही हैं, 1 ब्लॉक है, तो क्या करोगे आप? खोलनी पड़ेगी. आप बोल रहे हो 3 तो बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है, चल रहा है. 1 ब्लॉक है. मैं देवी माँ को विजुलाइज नहीं कर पा रही. ओके, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वाला हार्ट, जो वो आर्टरी ब्लॉक्ड है आपका, मदर को आप फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं किसी वजह से. इसीलिए देवी की Not माँ for को हम this. वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं. फादर इज फाइन, शिवा इज फाइन, तो फादर के साथ ठीक है. कान्हा इज गुड, तो बच्चों के साथ ठीक है. सखा ठीक है, तो सखा के साथ भी सब बढ़िया चल रहा है ना. तो मैत्री भाव है, सरेंडर टू द लॉर्ड भी है, सब कुछ है. मदर का वो जो नर्व है, जो आर्टरी है, वो कनेक्टेड नहीं है. इसीलिए देवी माँ को आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है. तो या तो पूरा सरेंडर कर दो देवी माँ को. करेक्ट. मैंने क्या कहा था पिछली बार? जो भाव मिसिंग है वही सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए. Oh, yes, yes. वो हील नहीं हुआ है, हार्ट पूरी तरह से हील नहीं हुआ है. 3 आर्टरीज ठीक हैं, 4था आर्टरी ब्लॉक्ड है. अच्छा साइन नहीं है, बाद में कुछ हो सकता है. No, So then, फटाफट नहीं, I'm just joking, but understand this: if some part of love is missing, your heart is not healed. Unless your heart is not healed, you will not move forward in the spiritual journey. आप वहीं अटके रहोगे. अगले जन्म में आके फिर हील करोगे. हाँ, तो अगले जन्म तक वेट करना है तो वेट करो. अदरवाइज अभी मौका है, या तो देवी माँ को पूरी तरह से सरेंडर कर दो और अपनी माँ को फॉरगिव कर दो. करेक्ट. जैसे मैंने कहा 800 करोड़ लोगों में से आपको वही दोनों लोग मिले थे जिनके यहाँ पैदा होने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ. अपने पेरेंट्स को हर हालत में आपको माफी मांगनी है, माफ करना नहीं है, आपको माफी मांगनी है. आप इतने बड़े नहीं हो गए कि उनको ब्लेम करके 40 साल 50 साल निकाल दिया आपने. आप 50 साल से उनको गलत प्रूव कर रहे हो, उसके लिए माफी मांगो पहले. I have thanked her and I told her I've loved her, but नहीं अभी हुआ तक ना, शायद कनेक्शन नहीं बना ना. नहीं हुआ. बल्ब नहीं जल रहा है. बल्ब नहीं जल रहा है, या तो स्विच खराब है या तार खराब है, चेंज करना पड़ेगा ना. बल्ब भी चेंज करना पड़ेगा. वहाँ उस पर्टिकुलर कॉर्नर में अंधेरा है, लाइट नहीं जल रही. अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिलहाल इतना ही काफ़ी है. तो या तो आप उनको पूरी तरह से माफ़ करिए. करेक्ट. बहुत सारे टेक्निक्स हैं आपके पास, हीलिंग के टेक्निक्स हैं. आपने तो हीलर्स प्रोग्राम भी किया हुआ है. हाँ, NLP में भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हम करते हैं जो. करेक्ट. तो यू हैव टू ask for forgiveness and forgive your mother. Love her, accept her, thank her, forgive her, contribute to her soul.
अभी हैं वो या she is No, she's not there. she is not there. alive. Then why do you want to take it on to the next birth? वो तो चले गए, अब तो आराम से उनको माफ कर सकते हो ना आप, या माफी मांग सकते हो, उनको सुनाई देगा, डोंट वरी, क्योंकि आपको अपना हार्ट हील करना है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना. Don't bother about what she is thinking or what she will feel or whatever she has not said or not done. You do whatever you is required from your side. You ask for forgiveness, you are free. You forgive someone, you are free. Don't wait for them to ask for forgiveness. So you love them, accept them, forgive them, thank them, and you will be free. Then you will be able to sing. आपको सिर्फ देवी माँ के ही भजन गाने हैं अगले एक हफ्ता, और अगले वेडनेसडे बताइए फिर. And it will be healed in 1 week's time. It will be healed. Don't worry. मालूम है तब तो आसानी से. प्रॉब्लम तब होती है जब मालूम ही नहीं होता कि हार्ट बंद है, मालूम ही नहीं होता कि अंधेरा है. ठीक है ना? मालूम है आपको क्या प्रॉब्लम है, तब तो वो सॉल्व हो जाएगी आराम से. Let's acknowledge Parveen ji. It takes a lot of courage to share in front of a group. Yes. All right. Anybody else who would like to share? But I hope something has opened up for everybody. अगर आपको ये है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका हार्ट उस एरिया में ब्लॉक्ड है. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हार्ट चक्रा से ऊपर नहीं जाएगी. मैं लिख के दे सकता हूँ. I would like to share. Yes. Suppose हमने किसी को माफ भी कर दिया, हमने forgive किया, और we tried to invoke that divinity and that love, since I have done with my son, but the other person is not understanding. आपको पूरी तरह से मालूम है कि आप क्लियर हैं, आपकी तरफ मैं में कोई बिल्कुल ब्लॉक clear नहीं हूँ. है. नहीं. हाँ, गुड. सो योर हार्ट इज हील्ड. अब कार्मिक अकाउंट हील होगा, टाइम लगेगा, बट फर्स्ट योर हार्ट हैज टू बी हील्ड. आपकी तरफ से कोई क्या भी, ये पता कैसे चलेगा कि मेरा हार्ट हील्ड है? जब तक Like वो मैंने आके अपनी बोलेगा तरफ ना, से. आई लव यू मॉम, forgive me, he will ask for forgiveness, and he will forgive you, or he will come and thank you, he will do something which will happen. Be open to it. And now you are in the healers program, you will learn a lot of techniques how to heal. Relax. वो ठीक है नहीं ना? हुआ अभी तक उसने आके ऐसे नहीं बोला. मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया, बट हाँ, वो तो अभी तो आगे शुरू से किया नहीं. आपने, जर्नी तो अभी शुरू किया आपने. आप इतने हजारों सालों से जो उसको दुख दिया हुआ आपने एक दूसरे को, वो कहीं ना कहीं आके जाके रुकेगा ना. कितने जन्मों से एक दूसरे को परेशान किए हुए, फिर कहते 2 हफ्ते की हीलिंग कर ली हमने, हम सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए. इतनी जल्दी नहीं हीलिंग होती है. हीलिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जब तक सांस चल रही है आपको हीलिंग करनी है. Healing means I am whole, complete and perfect. You are whole, complete and perfect, and our relationship is whole, complete and perfect. Now we exchange only love, peace and joy with each other. That is healing. और ये अपने लाइफ में जितने सोल हैं उन सबके साथ जब तक ये नहीं होगा तब तक आते रहोगे इस जन्म में, मतलब अगले जन्म में. और कई जन्मों में कि आपने बैकलॉग लगा रखे हैं, तो इस जन्म में अब जाग जाओ. ठीक है, जाग गए हो, अब आप हीलिंग के जर्नी पे चलो, सबको हील करते जाओ. कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई रोक धोक नहीं. एक ही काम है जिंदगी का, जब तक सांस चल रही है हीलिंग करते जाओ सबकी. सबको लव पीस एंड जॉय भेजो. उसके लिए पहले आपको लव पीस एंड जॉय से भरना पड़ेगा अपने आप को. इसीलिए भक्ति योग जरूरी है. मेकिंग सेंस? या मेक सेंस. बीच में मैं यस संजू इंटरफेयर जी. कर रही हूँ सर, बस अब मुझे जाना पड़ेगा. मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और काफी मैंने सोचा भी इसके ऊपर भी, बाकी सब लोगों की भी बात सुनी, और कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वेडनेसडे जरूर आऊं. डेफिनेटली. थैंक यू अंजू जी फॉर बीइंग हियर. एंड एज यू सेड, आज आपको जल्दी जाना है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग पूरा देख लीजिएगा, और अगले वेडनेसडे से एवरी वेडनेसडे वी हैव दिस सेशन. डू जॉइन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. लेट्स एक्नॉलेज अंजू जी फॉर हर प्रेजेंस. या, सबको Okay. नमस्ते. नमस्कार. Okay. Thank you. Yes. So that's Sanju ji. She had to go. Okay, fine. Thank you, Simi ji, for inviting your guests. That shows that you are making a lot of impact in your society and your community and your family, right? Yeah. And trust me, it is not about they coming here and attending the session. It is about you are transforming your relationship with them and making a contribution in their life. It's a huge thing.
किसी भी आत्मा के लिए जो सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो ये है कि आप उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक बूस्टर डोज दे दो, ट्रू। है ना। फिर खाना खिलाया, वो 4-5 घंटे में हजम हो जाएगा। कपड़े दिए, 3-4 महीने चल जाएंगे, राइट। अगर आपने उसको किसी को नौकरी भी दिला दी या जीविका भी सिखा दिया कुछ कुछ, तो भी वो इस जन्म के लिए काफी अच्छा हेल्प करेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने उसके आने वाले 100 जन्मों के लिए आपने बहुत बढ़िया एक कर्म कर दिया। यू टू अंडरस्टैंड। सो स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन to some life is the greatest contribution which is described in the scriptures. तो किसी को स्पिरिचुअल पाथ पे लाना इसे बहुत बड़ा पुण्य का काम है। Yes, so let's acknowledge Simi ji for inviting your guests, and all of you Thank should you, do sir. that, by the way. Yes. Coming back to the topic. Yes, anybody else who wants to share? कौन बोलना चाहेंगे? कितने लोगों की दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? मनी, परीना? Yes, so I want to say something. Yes, go ahead. Okay, so I just in short, like है ना हमेशा से ना like बचपन से I would say like in our family we had major influence of worshipping Mata Rani. But quite recently I have shifted, मतलब shift ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, but मतलब I've started worshipping Kana ji more, right? So I listen to all sorts of bhajan, मतलब मैं पूरा मतलब अगर बिल्कुल खाली भी बैठी हूँ तो सुबह भी अगर chant कर रही हूँ रात को भी, तो it's only about Kana ji. So treating him like my beloved. मैं ये सोच रही हूँ मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ एज अ मतलब अगर मतलब आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट, मतलब जो भजन चल रहे होते हैं तो मेरा वो वाला पोर्शन क्यों नहीं फील हो रहा, जैसे अगर आपकी बात सुन रही हूँ कि एज अ बिलवड भी सोचती हूँ, बिकॉज मैं उनको हर चीज ही मानती हूँ, है ना। हर हर फॉर्म के भजन होते हैं, एज अ लल्ला, है ना, एज अ सखा, एज अ गुरु, एज अ बिलवड, कि तुम ही तुम हो हर जगह, तो मेरा वो वॉइड क्यों नहीं फील हो रहा फिर, यू नो, Very good question. लाइक Let's acknowledge या Mani ji first. Yeah. ओके, नाउ टेल मी, आपको क्या लगता है कितने दिनों से आपने ये जर्नी शुरू की हुई है? 5 जस्ट साल? कपल ऑफ डेज आई वाज, है कपल ऑफ डेज? नहीं मतलब भक्ति योग तो मुझे लग रहा है शायद बचपन से ही चल रहा है, बचपन से बट 25 साल 30 साल मान सकते हैं, ठीक है। या 30 ईयर्स ले लेते हैं, 30 राउंड फिगर, राइट। अब आपने 30 बोरी मिट्टी डाली है एक खड्डे में भरने के लिए, खड्डा नहीं भरा, मतलब क्या है? मतलब क्या है? आपको गड्ढा नजर नहीं ही नहीं भरा। आया वो 30 बोरियां कहाँ गई, नजर ही नहीं आया। अब इट वही आप बोल रहे रिक्वायर्स हो ना, मोर, राइट राइट। वो खड्डा नहीं है वो वो बहुत बड़ा एक वैली है, इतना बड़ा ओके वो हो चुका है। उसके अंदर 30 बोरी आपने मिट्टी डाली, दिखा भी नहीं है अभी तक वो। तो इमेजिन आपने कितना बड़ा कांड किया होगा इतना बड़ा वैली बनाने के लिए कि वो भर नहीं रहा है। सो आपके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, और मे बी फ्यू लाइफ टाइम्स। आर यू ओके विद इट? But if you really pick up यस momentum, then possibly it could be done in another 5 years or 10 years. Correct? ओके तो कब होगा? Wrong question. Am I doing the right thing? That is the right question. So if you can worship divinity in all the forms, जैसे आपने बोला माता रानी भी हैं, छोटे कन्हैया भी हैं, बड़े कन्हैया भी हैं, कृष्णा भी हैं, करेक्ट, सखा भी है, मैत्री भाव भी है, गुरु भी है, सब कुछ है, बिलवड भी है। तो सारे फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, so you are doing the right job. That means you are putting the right efforts. अब यही करते रहना है, यही करते रहना है। Possibly this void is there so that you can move on the path of self realization. हर सोल को एक धक्का देने के लिए एक पुश आता है, circumstances of life will push you in that direction, right? तो जो वो void है, that is what is actually the reason why you are moving on to spirituality. वो गड्ढा अगर नहीं होता, आप शायद spirituality में जाते ही नहीं, आप औरों की तरह बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे होते। that's right sir, otherwise I don't have complaints from my life. Correct. If you I don't mean have any complaints, there is no need for spirituality. Correct.
That is how people live. Right. So thank God that you Definitely. are given this gatha so that you can worship the divine. आप divine के बारे में सोच रहे हो. You know, there is a context in Mahabharata when Kunti is talking to Lord Krishna, and she says, ki, you know, oh Kana, oh Krishna, keep giving me troubles, because whenever I'm in trouble, I'll remember you and I will be connected to you. You understand? Right. So some difficulties Mhm. come so that you keep remembering God and you are moving forward on the spiritual journey. Pleasures of life are not important. Your spiritual growth is more important. So sometimes tough situations are there to move you on that direction. So acknowledge that, appreciate that. Keep moving on the spiritual journey and also enjoy life. Don't take it very seriously. Spirituality का मतलब ये नहीं कि you have a long, serious, dead face. No, spirituality means a lot of fun. You should enjoy life. Correct? Don't take life seriously. I've said that many times. Don't take life seriously. Nobody has gone out of this place alive. Yeah. तो यहाँ से जिंदा कोई नहीं गया. यहाँ खेलने के लिए आए हो, खेलो, और जब आउट होके जाओगे, it's like batsman will get out, you will go back to the pavilion. That's all. You are coming here to play, so play, enjoy the game. Right? Very good, Mani. Let's acknowledge Mani ji. Yes. Anybody else who would like to share? Yes, Gunjan. सर जैसे जैसे मनी ने भी कहा और प्रवीण जी ने भी कहा कि दैट यू नो दैट डिवाइन मदर वाज लाइक प्रवीण जी ने और मेरा ये क्वेश्चन था, डिवाइन मदर को अगर हम इन्वोक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होने लग जाएगा. Both ways it will work. जैसे अभी प्रवीण जी ने कहा, वो अगर मदर के साथ डिस्कनेक्ट है तो आप उस फीलिंग के साथ वर्शिप कर ही नहीं पाओगे डिवाइन की, है ना. तो दोनों तरफ से आपको बढ़ना है. इनको माफ भी करना है और वो भी करना है. दोनों तरफ से आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जाके वो बैलेंस आ जाएगा, वेयर यू विल बी एबल टू वर्शिप द डिवाइन, आल्सो अ डिवाइन मदर, एंड यू विल आल्सो बी एबल टू फॉरगिव योर मदर हियर, एंड यू विल एंजॉय ग्रेट रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स और योर मदर. देन यू नो, हाँ यहाँ पे हो गया और वहां से भी कनेक्शन आ गया, you will feel full, you will feel absolutely fulfilled, and that is when you So will it's say your heart is healed. तो इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे सिमी जी ने कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी सॉरी बोले. वो कब बोले, बोलना जरूरी है, वरना आते रहोगे आप लोग, मिलते रहोगे जन्म पे अगर जन्म. वो बोले ही ना, मतलब इतनी ईगो हो उसमें, वो पूरी उम्र ही ना बोले और ऐसे ही चले जाए, फिर तुम मतलब अपनी दोबारा उनके लिए हमें आना पड़ेगा. तुम अपनी ईगो का ध्यान रखो, ठीक है, और अपने एफर्ट्स का ध्यान रखो. वो भी इंसान है. जब आप लव पीस एंजॉय की एनर्जी भेजोगे, गोल्डन बॉल भेजोगे, तो वहां पे भी एक कहीं ना कहीं जाके ब्लैक बॉल खत्म हो जाएगा, तो वो गोल्डन बॉल ही देंगे. वो क्यों ब्लैक बॉल दे रहे हैं आपको? क्योंकि आपने पहले ये ब्लैक बॉल भेजे हैं. आप ब्लैक बॉल देना बंद कर दोगे, गोल्डन बॉल देना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं तो ब्लैक बॉल से एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे ना. ये तो शिवानी जी का ज्ञान है. तो जब आपने ब्लैक बॉल देने बंद कर दिए तो उनके वहाँ ब्लैक बॉल रिसीव होना बंद हो जाएगा. उसके बाद वो देखेंगे गोल्डन बॉल आ रहे हैं, तो वो बाद में वो जो देंगे वो भी गोल्डन बॉल ही होगा. ये यूनिवर्सल लॉ है. दिस इज ए स्पिरिचुअल ट्रूथ, लॉ ऑफ कर्मा. सो डोंट थिंक कि मैं तो सब कुछ सही कर दूंगी, वहां से नहीं आया तो. आप सब कुछ सही करोगे तो वहां से आना ही है, क्योंकि वो सोल भी तो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है. करेक्ट. But especially with parents, it is very important. And your children, very important. With your partners, very important. क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है. यू शुड अंडरस्टैंड. 800 करोड़ लोगों में आपको यही 5-6 लोग मिले हैं जहां पैदा होने के लिए और शादी करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए. तो तो एक्स पार्टनर तो नहीं कहीं वापस आ जाएगा सर? जो भी आएगा, आए या ना आए, यू हैव टू क्लियर दैट लव पीस एंड जॉय एनर्जी, अदरवाइज इट इज ट्रबल फॉर यू. तो जो मौका मिला है उसको यूज करो, रिलेशनशिप्स को हील करो, लोगों को कंट्रीब्यूट करो. यही काम है आपका. और ये करते करते एंजॉय करो, रोना नहीं है. बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल. हाँ, प्रवीण मानकर मंत्र, फीलिंग हैप्पी, गिविंग थैंक्स. बड़ा सिंपल सा मंत्र है उनके लाइफ का. फील हैप्पी, गिव थैंक्स, और अपनी स्पिरिचुअल साधना पे ध्यान दो, और लाइफ को पूरी तरह से जियो, पूरी तरह से मस्त रहो. दैट्स इट. इट्स सो सिंपल.
But we insist on making it complicated. नहीं मेरे को गुस्सा आ रहा है, I have hatred, I have jealousy. Congratulations, you are entitled for another 10 births. Correct? अपने विकारों को दूर करने के लिए ही आपको अपने अंदर लव को भरना है, ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सब से छुटकारा पा सको. Making sense? All right, very good. Let's acknowledge Gunjan ji. Okay, last and final call. We are reaching the scheduled time. Anybody who feels that something is left out or you have any question, please go ahead. So another important aspect of Bhakti Yoga, I'll tell you, if you are practicing Bhakti, how do you know that you're making progress? You will become absolutely fearless in life. आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी. You are so much in connection with the divine. You will not need anyone in your life. That doesn't mean you will be alone. You don't need anyone. Not needing is a big freedom. You don't need anybody's love in your life. And when you don't need it, you will get it. As long as you need it, you will not get it. क्योंकि अगर आपकी नीड है तो आप में बहुत अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट की वजह से आप उसको दूर धकेल दोगे. Not needing is a big freedom. So fearlessness is the manifestation of the, you can say, the progress of your journey of Bhakti Yoga. You will become fearless. You will not need anything. It is not arrogance. It is not being lonely. It is simply being in love with divine. आप बहुत comfortable होंगे अकेले. And when you are so full of love and so comfortable with yourself, people will start flocking towards you. Get that? So people will come and love you. So you don't have to ask go with a begging call, please love me, please love me, please love me. No. You relax, you connect with the divine, share love, peace, and joy to everybody, and people will fall in love with you. Helplessly, they will fall in love with you. Like all the avatars that we have experienced. No? Can you visualize Lord Krishna asking the gopis, please love me? No. They were madly in love with him. Yes? Anybody who met Lord Ram, Sri Ram, was falling at his feet. He was so full of love and compassion for everybody. So when you're radiating love, peace, and joy, you will have no, you can say, shortage of love from people. But there will be no need. You won't be needing them, but it will come. आई बात समझ में? Yeah. So you will be absolutely fearless. You will not be fearful. ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा? वो चला गया तो क्या होगा? वो आया नहीं तो अब है मैं मर गई. All this will go. You will become absolutely fearless and you will be full of joy. That is the progress of Bhakti Yoga. That is how you have to monitor the progress in Bhakti Yoga. So it is easy path, but yes, it will take a lot of expertise or a lot of spiritual sadhana to reach to the levels where you can actually go to Bhakti Samadhi. Bhakti Samadhi means like what Mirabai experienced. You are in love and so much in love that you are established in love. You are established in God. And there was not even a thought that she needed Krishna. She was in love with Krishna, that's all. Not needing anything. And love is always about giving, not receiving. उसमें अहंकार की कोई जगह नहीं, उसमें समर्पण. Just before starting this program, I was watching a video. Lord Krishna is telling Arjun there, in the battlefield, he is telling him, I don't know what was the context, but he was telling him that line I like, that तुम्हारी मुट्ठी बंद है, अहंकार की मुट्ठी है, या तुमने अंजलि मीन्स हाथों में वो जो लिया हुआ है, तो आर यू फिलिंग इट अप विद, जब अंजलि ऐसे करते हो तो गंगा जल आता है और फिर आप उसको मुंह तक ले आ सकते हो. मुट्ठी बंद है तो कुछ नहीं मिलेगा. तो अहंकार की मुट्ठी है या समर्पण का अंजलि है. करेक्ट? So that is very, very important. And that is Bhakti. So Bhakti doesn't mean some God in some form will come and no. God is invoked in you and you will be guided by that divine to take the right actions, to do the right karma, and you will create the right results. That is the message. Yes? Right, exact 10 o'clock. I would like to share one thing. Yes. Please go ahead.
So I have been invited by Josh Talks to give my speech, and it's a powerful speech, like story I have to share on Josh Talks next Tuesday. And I would be thanking Shashi ji there about my journey now, which I am taking. So this message will go to 1 crore people, Oh, wow. possibly. That's great. Fantastic. Anji Congratulations. ji, yesterday only somebody suggested me to give the interview at Josh Talks. So Hmm. maybe I'm the next one. Good, good, good. Great, great. Go ahead Josh spread Talks is the just light. like TEDx. TEDx Yeah. is in Yeah, US, TEDx. Josh Okay. Talks is in India. Yeah. Okay. It's Very good. one of Very good. the form. बहुत बढ़िया. Spread the light of wisdom. That's all. या भक्ति योग बोलो, ज्ञान योग बोलो, जो मर्जी बोलो. Spread your light. Whatever you can spread. Let the hearts awake. That's all. Very good. Very good, अब Simi. आप मुझे पाथ दिखाएंगे ना वहां का. Congratulations. All the best. All the best for your. This is next Tuesday. Yeah, we all will send Wow. a lot of blessings and best wishes to you. Yep. Yes, I need All badly. I need all best wishes and healing and everything. Sure, कि sure, मैं sure. वहाँ You will get that. कहीं. बहुत And बढ़िया. Simiji, are you in a position to share that once it's done? You will get the recording. Yeah. I will be sharing So everywhere. share that in So DHV. Share that in DHV group. yes, Everybody will have a look at yes, it. I'll Yeah. do. It's all my life story. It's a काफी empowering story है. Very good. इसलिए उन्होंने अप्रोच किया कि आपको यहाँ इनवाइट करते हैं. मैंने बोला why not? Fantastic. मेरे Very तो good. So let's acknowledge him, and तो that is how you go ahead and इतने spread the experience है light. कि पूछ How लो. simple है. Right. So you never know what opportunity will come to you and how you are going to spread the light. But if you are ready to spread the light, trust me, the divine will find out ways. Yes. Okay. Who has not shared anything? Praveen ji ne share कर लिया. Thank you, Parina, Manju. if Thank you're you so there much. and if you're comfortable, you should share. What are you taking away from the session today? Mani has shared. Rupa, Jyoti ji, anything you want to share? I know if you're busy, you can write that as a chat. That is fine. Rupa says, congratulations to Simi ji and Gunjan. Okay, good. अच्छा गुंजन आपको एडवांस में कांग्रेस बोल दिया. बहुत बढ़िया. Okay. Parina must be tied up. She says, beautiful session. Okay, great. So now with this, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Enjoy a great week. We meet again next week with lots more wisdom bites. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Bye-bye. Aham Brahmasmi. Brahmasmi. Thank you, Thank you. sir. Take Thank care. you. Bye-bye. Yep. Thank you.